Go live with this. Hi everyone. Hi. What's up? Who do I have here? Hi. How are you? Hi Likit. Hi Karmik. Hi Sai. Hi Superminent. Hi Om. Hi Hiren. Same Harshvardhan, you are an inspiration too. Thank you for being. Opening is great. Man, it's ridiculous. Okay, yes. आज कौन सा टॉपिक है बस? नीड अ सीरीज ऑन जीएसटी. जीएसटी पे क्या होना है? हाय अनुराधा. हाय अडानी फैन पवन. हाय गणेश. व्हाट्स अप? 100 करोड़ भी. अभिषेक क्या करे भाई? मुझे अपने पैसे को कलर चेंज करना है, कुछ हेल्प होगी? हाँ भाई, अगर सो फ्लैको हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भाई मुझे अपने पैसों का कलर चेंज करना है, ठीक है? तो ठीक है, वही आज करेंगे अपन. ठीक है, विल चेंज दी कलर ऑफ योर फंड्स. ओके, हाउ लॉन्ग विल द सीरीज कंटिन्यू? द सीरीज आई डोंट नो, जब तक है जान. पैसे बचाने का भी ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. No, this is not $6 million on my back. So apparently the news is an art piece, just like this or maybe different to this, was sold for $6.2 million. And if we convert that to INR, it is approx 50 CR. तो देखा जाए तो एक केला बिका है 50 करोड़ में, एंड विच इज प्रिटी इंटरेस्टिंग. वाई? Okay, so let's start with what's happening here and what's happening around the world. Okay, so let's say there's this country known as China, People's Republic of China, which is far more advanced in almost everything. And just like this country, this thing that happened. Okay, one of its citizen only bought. Justin's son bought this banana. ठीक है, तो who is the founder of Block, who is the founder of Tron. ठीक है, Tron is a coin. ठीक है. Anyways, coming to China, just like China leads everything in the world, even in the case of converting or whitewashing the money, Chinese people are top notch everywhere around the world. There is an official stat by the World's Organization which says that Chinese people individually have whitewashed $1 trillion from 2002 to 2011. In 10 years, they have whitewashed $1 trillion. जब 1 ट्रिलियन की इतनी कीमत भी नहीं थी. ठीक है. Plus, in Mexico, okay, the whole of Mexico sells drugs to US. Okay, so all of these drug cartels were whitewashing their money at the rate of 8 to 9%. When Chinese entered this market, they dominated it and they were whitewashing it in the rates of 2 to 4%, which is pretty low. Okay, and how Mexicans used to do this is Mexicans also used to convert their cash to books via art. How? Because in 2010, these artworks are generally sold anonymously. Okay, you can buy it without your name coming in. Okay, same happened in Mexico.
People were whitewashing their money via these artworks as there was no requirement of using your name to buy that artwork. Okay. In 2010, Mexican government regularized and made a rule that whoever is buying an artwork cannot be anonymous. He has to declare a name, and the second thing is he has to declare the source of funds. In that year particular, the artwork that was sold in Mexico fell by 70% in that year. So basically, which suggests that all of these artworks were bought by drug cartels who were whitewashing their money via these artworks. ठीक है ठीक है ठीक है. Anyways, I just wanted to pitch in China. ठीक है, let's start. ठीक है, why art and what's happening with artwork around the world using the cash economy. So I'll tell you, the global art market is approx $62 billion. It is peanuts compared to any other market. Let's consider market of tomatoes. सिर्फ और सिर्फ टमाटर का मार्केट ही दुनिया में $190 बिलियन का है. एंड आर्ट मार्केट इज सच स्मॉल मार्केट कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट दैट यू हैव इन योर माइंड. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, द होल ऑफ द आर्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड, जो $62 बिलियन का मार्केट है, उसमें से 82% ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय ओनली 3 कंट्रीज एंड 3 cities स्पेसिफिकली. फर्स्ट इज यूएस, second is UK, third is China. US में it is dominated by New York, which is Manhattan, the area जहाँ पर auctions होते हैं. Second is UK, London में. ठीक है. Third, China में it's Hong Kong. So 82% of the art market is dominated by these 3 cities. इंडिया में कैसे व्हाइट वॉश करें? इंडिया में व्हाइट वॉश क्यों करोगे भाई? जब तुम्हारे पास में 100 करोड़ रुपए होंगे तो इंडिया में क्यों, क्या लेने इन्वेस्ट करोगे तुम? ठीक है. एनीवेज, सो लेट्स डिस्कस व्हाई आर्ट. पहला तो आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. समथिंग दैट इज अगली टू यू माइट बी ब्यूटिफुल टू समवन एल्स. सेकेंड, इट इज वेरी इजिली स्टोरेबल. ठीक है. ऑल ऑफ दिस पेंटिंग विच हैज कॉस्टेड ₹50 करोड़ टू समवन is easily storable at some place. Other than that, 50 CR is, I mean, that is a huge money which requires a lot of space to store, या फिर कुछ और खरीदता है उसका. Second, okay, second is the size is very small. Third, anonymous transactions. All of these auction houses, there are very few auction houses which are considered very reputable in world. ठीक है, वही ये सब auctions करवाते हैं. This auction was also done by a Manhattan auction house. Sotheby's is something, ऐसा कुछ नाम है उसका. ठीक है. Anyways, that auction house has this feature that anonymous, anyone can buy art without their names coming out. Just what happened in Salvatore Mundi. उसमें there's this art piece by Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi, which was valued at $10,000 शुरू में तो. ठीक है. But then the Saudi prince bought it for $450 million. Okay, and that too anonymously he bought. Okay, so there is no requirement to disclose who has bought the artwork and why is he buying it. Fourth is high value. ठीक है. Unshunt value. See, there are overpriced stocks. There is silver. There is gold. Then there is diamond. ठीक है. अब जिसके पास में इतना पैसा है कि उसके पास में कुछ भी खरीदने को नहीं बच रहा है, तो दे बाय आर्ट पीसेज, दे ओवर वैल्यू इट, दे इन्फ्लेट देयर प्राइजेस, दे डू वॉश ट्रेडिंग. मतलब A is selling to B, B is selling to C, C is selling to D, D is again selling to A, and overhyping the price. So this is what's happened in artworks. They overvalue the prices. ओके, सोल्ड टू पार्थ. ठीक है, अलग ही इधर बिडिंग चल रही है. ठीक है. एनीवेज, आई टेल यू, लेट्स कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जांपल. हाउ, लेट्स से समवन हैज अर्नड रुपीज
ठीक है. लेट्स से समवन हैज रुपीज 100 CR इन कैश इन इंडिया. उसने चाहे कैसे भी कमाए हो, ठीक है, इट इज इन कैश. फर्स्ट इज दैट मनी कैन नॉट बी यूज्ड इन बैंकिंग चैनल्स, ठीक है, बिकॉज इट इज इन कैश. सेकेंड इज if it is used openly it will attract lot of eyes, so this money needs to be washed, plus the chain needs to be complicated how this money got with that person. Okay, तो उसके लिए सबसे पहले बंदा क्या करेगा, सबसे पहले बंदे को करना है, he needs to create a ठीक है. 7, अरे ये इसकी अलग ही चल रही है, ठीक है. ठीक है, एनीवेज इस जिस जो भी फाइनल ऑक्शन करेगा आई एम गोइंग टू टेक दैट मनी फ्रॉम, और ठीक है, और बाकी अपन पार्टी वगैरह करेंगे उसकी सब मिल करके, ठीक है. Anyways, the first process is he has 100 rupees CR, 100 rupees, 100 crores in cash. He needs to create a front company or a shell company in Caribbean Islands, particularly where the financial regulations are loose. ठीक है. Let's consider yesterday we studied about a lot of Caribbean Islands. One such island is Saint Kitts and Nevis. ठीक है. वहाँ पर he can create a company by the name of, let's say, ठीक है, यहां पर ये कंपनी बनाई आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड. यहां से पैसा भेजा इधर, इस कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करा. देयर इज नो रेगुलेशन किसका पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे हो रहा है. इट इज 100% एक्सेप्टेबल इन दीज कंट्रीज. ठीक है. नाउ फिर इसके बाद में गए ये मैनहट्टन. नाउ ऑक्शन हाउस डजंट केयर कि किसका पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. इट इज ऑलवेज एनोनिमस. इवन इफ दे केयर, दिस इज द कंपनी दैट विल बी द फ्रंट कंपनी दैट विल बी यूज्ड टू राउट दिस 100 CR. ठीक है. प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑक्शन हाउसेज आर देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड. अरे भाई कितना कितना प्यारा आदमी है यार. ओए सुनो, अब इम्पोर्टेंट पार्ट चालू है. ठीक है. Without banking channel, how they moved money to the company? ठीक है. तो लेट्स सी, मैं ही लिख देता हूँ क्या इधर. यार सिंपल, वेरी इट्स वेरी सिंपल नो. सेंड योर कैश टू दुबई एंड दैट दुबई और सम अदर कंट्री जहाँ पर भी अकाउंट्स है वो दैट विल ट्रांसफर टू दिस. ठीक है. And it is very easy to send cash to Dubai. ठीक है. एनीवेज, ठीक है, मैनहट्टन ऑक्शन हाउस गए. ठीक है. दैट ऑक्शन हाउस इज अ रेप्यूटेबल ऑक्शन हाउस. ठीक है. आइदर इन HK, न्यूयॉर्क और लंडन. ठीक है. वी हैव चोजन दिस मैनहट्टन ऑक्शन हाउस. ठीक है. इसको जाकर के बोला वी हैव दिस आर्ट पीस दैट वी वांट टू बाय. ठीक है. ये केला. ठीक है. एंड ठीक है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. नाउ वी डिसाइडेड टू बाय दिस फॉर रुपीज 100 CR. ठीक है. ये अपन ने रुपीज 100 CR में खरीदा. वी हैव पेड दिस ऑक्शन हाउस द मनी, वट एवर द मनी इज आस्क्ड. ठीक है. ऑक्शन हाउस ने अपना पैसा कमीशन वगैरह काटा. ठीक है. ऑक्शन हाउस गेव अस दिस. ठीक है. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स. ठीक है. व्हाट टू डू पोस्ट ऑक्शन. ठीक है. वी गॉट दिस आर्ट पीस ऑफ 100 CR. सो देर आर ऑलमोस्ट थ्री ऑप्शंस दैट अ पर्सन कैन यूटिलाइज दिस 100 CR. ठीक है.
सबसे पहले तो दीज आर ऑलवेज स्टोर्ड इन फ्री पोर्ट्स. Okay, free ports are basically places in the ports. They are almost everywhere in Europe and most of the Caribbean islands. Okay, one of the free ports where that Salvador painting was held was Amsterdam, I believe. Okay, so these free ports are tax free, and plus they are highly secured. So either these paintings are held at free ports or दे आर सोल्ड देयर ओनली. ठीक है, अगर उसको ऐसा ही कोई बंदा मिल गया जिसको इसी केले को 100 करोड़ रुपए से ऊपर 125 में खरीदना है तो ही विल सेल दैट टू हिम. ठीक है, अदर देन दैट व्हाट दैट पर्सन कैन डू इज उसके पास में वैल्यूएशन रहता है. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द आर्ट वर्क. ठीक है, दैट वैल्यूएशन से व्हाट ही विल डू इज टेक अ लोन. ठीक है, ठीक है, उस लोन को अपनी कंपनी में यूज लेगा एंड देन उस लोन की डेट पे इंटरेस्ट भरेगा विच विल बी टैक्स फ्री. ठीक है, अदर देन दिस देयर इज अनदर थर्ड ऑप्शन विच इज ऑक्शन हाउस. ठीक है, ऑक्शन हाउस क्या करते हैं? ऑक्शन हाउस इज अ फॉरेन एंटिटी फॉर इंडिया. व्हाट ऑक्शन हाउस कैन डू इज fund our startup with whatever percentage that the auction house has agreed to. ठीक है, let me read what questions are here. हाँ, so this is pretty much it. Okay, लेट्स रीड कमेंट. 200 करोड़ भी हो सकता है. हाँ, 200 भी हो सकता है यार. इट इज़ वेरी द आर्ट, दैट्स हाउ आर्ट वर्क्स. ठीक है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, अपन ने ये केला बेचा है 100 करोड़ में. ठीक है, मैनहट्टन ऑक्शन हाउस में तो सिर्फ और सिर्फ 50 में बेचा है. ठीक है, आई विल जस्ट ब्रीफ यू विद द होल प्रोसेस अगेन. ठीक है, सबसे पहले 100 करोड़ इन कैश इन इंडिया. ठीक है, वो बाहर जाएगा थ्रू दी अंगड़ियाज या फिर हवालाज. ठीक है, इट विल गो टू सम अदर कंट्री विच इज़ let's say Dubai, Singapore, HK, which has easy banking to anywhere. There is a front company or shell company created in Caribbean island, particularly in St. Kitts Nevis or St. Lucia, by the name of Art World Private Limited. वहाँ पर ये 100 करोड़ जाता है. ठीक है, and then we go to Manhattan auction house, buy some modern art or some interesting art piece for this 100 CR. We hold it at a free port. फ्री पोर्ट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, इट टेक सम चार्जेस. तो या तो इट इज सोल्ड इन द फ्री पोर्ट ओनली, अगर कोई मिल जाता है अपने जैसा तो. ठीक है, अदर देन दिस इट कैन बी वैल्यूड एंड अ लोन कैन बी टेकन ऑन दैट अमाउंट. दैट लोन कैन बी यूज्ड इन्फ्यूज्ड इन आवर बिजनेस. ठीक है, एनीवेज इस पर्सन का नाम कहीं नहीं आने वाला बिकॉज दिस एंटिटी डीलिंग एवरीवेयर. ठीक है, आर्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. So everyone cares about artwork. Art world. No one cares about how did art world received this money because of the financial regulations in the Caribbean islands. ठीक है, अब इस लोन पे उसको इंटरेस्ट बढ़ना है तो वो इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री होता ही है बिकॉज इट विल बी लूजिंग आउट रेवेन्यूज फ्रॉम द कंपनी. अदर देन दिस, इफ द ऑक्शन हाउस हैज एग्रीड टू, ऑक्शन हाउस कैन फंड द स्टार्टअप्स एज अ फॉरेन एंटिटी. हाँ, वी कैन ऑल्सो बाय अ हाउस, सम फ्लैट में भी. ठीक है, वो तो खरीद ही सकते हो. Wasn't donation is also an option? Yes, donation is also an option, but then donation always attract lot of eyes, no? So कौन डोनेट करेगा आपको 100 करोड़ रुपए? ₹2 कम. ठीक है, yes, it can be traced back, but the tracing will always end at Art World Private Limited. Plus, the free ports are very secured and very confidential zones. ठीक है, even Manhattan auction house doesn't disclose any information. There are a lot of dealings, not in artwork, ठीक है, in cars or in antique items, ठीक है, or in vintage cars.
that is happening in UK. ठीक है, 100 CR let's say is a bigger amount. ठीक है, अगर let's not consider 100 CR, people do it for 5 CR, 10 CR. They buy a vintage car in UK by name of some other company and then use that car just for the sake of loaning purpose, or they sell it to someone else, or they just hold it for the purpose of valuation. Benefit of Caribbean island here is that no one is going to, art world will be owned by, okay. Benefit of Caribbean island is that it has good financial secrecy. Art world, even we can own in our own name or someone else's name. There are a lot of nominee directors. So what happens in Caribbean is it's a proper job role in Caribbean, that yeah, for lot of places in the world including Cyprus, Malta, what happens is there are a lot of directors which are ready to sign whatever you want them to sign. Okay, they take nominal charges. Someone's asking how to become a hawala operator. Okay, तो यार ये तो this is you need to go to Chandni Chowk or Javeri Bazaar, you'll figure it out. ठीक है. NFT also in the same boat. Yes, NFT is also in the same boat, but then NFT is less respected in the world. Okay, so yes, people prefer less of NFTs in these. A very interesting question. I want to learn all of this. I'm pursuing MA in economics. You can get the ebook, Harshvardhan. What are some crypto heavens? One of the crypto heavens currently in the world is Poland. ठीक है, Poland is really doing good. What exactly is? अरे भाई, पुलिस वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले कैन मेक दिस मनी, नो वरीज. Doing all these things. What has he achieved after doing all these things? ठीक है, तो ये जब 100 CR वापस उसके हाथ में आता है ना, इट कैन बी यूज्ड ओपनली, जहाँ पर वो चाहे, जैसे भी वो चाहे. देयर इज नो क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड, और अगर कोई सवाल उठाता भी है, सो ही हैज अ फुल चेन टू प्रूव दैट व्हाट हैज हैपेंड. हाउ टू ओपन, सो गौरव इज आस्किंग हाउ टू ओपन अ LP in USA and then build its credentials nicely and then take out a loan at maybe 2 to 3%. Okay. Oh, Gaurav has a very good plan. And Gaurav is the same person who is asking to buy houses in New York for $500 million. Yes. Okay. ठीक है. Am I missing anything? कोई भी सवाल वगैरह? If you open the company in your name, no, it cannot be traced back to you. But then, why open it in your name anyways when you have nominee directors? From where did I get this map in background? Okay, तो ये this is a very interesting thing. I will show you all something. Okay, very interesting. ठीक है, ये तो हो गया अपना 100 करोड़ रुपया. ठीक है, इससे चलते हैं, आगे आते हैं. ये अपना देश. ठीक है, नाउ दिस मैप इज नॉट एन इंडियन बॉट मैप. वाई आई विल टेल यू. ठीक है, किधर है अपने. ठीक है, सी एवरीवेयर यू विल गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दिस पार्ट जो भी अपना POK है, it is shown as a part of Pak only, and including China's part as well, जो चाइना ने ऑक्यूपाई करा हुआ है. ठीक है, so that is why this map is not bought from here. ठीक है, that is why I had to do this part which we legitimately own. ठीक है, तो हाँ, ये यहाँ से नहीं खरीदा हुआ है, ये बाहर से मंगवाया हुआ है. Flying Rajput is saying something. ठीक है, okay.
सो फ्लाइंग राजपूत कह रहा है कि आस्किंग irrelevant क्वेश्चन, हु इज आस्किंग irrelevant क्वेश्चंस? ठीक है यार, लेट देम हैव देयर फन. Ebooks, you can get ebooks. We are writing a lot of ebooks that we circulate inside only. Okay, if you want ebooks, just ping me. I'll give you the link. You can have it. Bro, can we outsource booking for a resort company in India through a consultancy based US in pay Indian company nominee? तेरी तो banker planning. Umaid has a very good planning here. ठीक है, that can be done. Umaid. LLC in USA. Or if someone wants to operate a LLC in USA as fast as possible, Wyoming and Delaware are places for you. ठीक है, $500 में खुल जाएगी कंपनी. खुश रहना, उधर अकाउंट भी दे देंगे. बैंक अकाउंट्स लाइक मर्क्यूरी इज वन विच कैन गेट. हाँ, दिलजीत कॉन्सर्ट्स ऑल्सो मनी कलर चेंजिंग एक्टिविटी. अरे आई हैव अ वीडियो क्रिएटेड ऑन दिलजीत कॉन्सर्ट्स बट आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट पोस्टेड येट. सो गुड पॉइंट आकाश, आई विल जस्ट पोस्ट इट टुडे. No, you cannot file crypto ITR in India without disclosing income source. ठीक है, take me in your team, most welcome. Pakwan Paradise. Bro, okay, Saurav is saying, bro, we are salaried laborers. Tell us something legally saving taxes. Okay, I have few ideas for that. Maybe we can talk on about it some other day. ठीक है. हाँ, yes, please do claim R&D that you are spending on your company. R&D is an allowed expense. उसको claim करो. How to watch crypto? इंडिया में तो there is no point. It's in my highlights. I'll check it out. ठीक है, anyways, bye bye everyone. Good night. ठीक है, this is the who won the bid? Please let me know in the. I'll just post this video. Who won the bid? ठीक है, उसका 0.1% तो ले ही लेंगे उससे. Bye bye, good night. Plus, very interesting thing I want to tell you everyone, that don't let the law come into the way of your business. With this thought, good night.